everyone, welcome back to Indian Online School, a school for Olympiad champions. A very happy Saturday, happy weekend. So today again we are into Saturday 4 p.m. class where we would be discussing an English article topic. Right before I start the topic, I request everybody to like, subscribe, comment and share. आपका ही इंकरेजमेंट रहेगा हमें और अच्छी वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ओलंपियाड्स के लिए तैयारी कर सकें। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आर्टिकल्स क्या होती हैं? Articles are very little words that comes before noun. But ये करते क्या है? They act like the adjective which would be describing about our noun here. Okay, so if I say article को समझने के लिए noun को भी समझना बहुत जरूरी है, right? कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि articles आते हैं noun से पहले and they would be describing it. Noun क्या होती हैं? Noun are the names of people, place or thing, right? Articles क्या होते हैं? There are only 3 articles, a and the, right? Nouns are so many. कितनी सारी nouns होती हैं, लेकिन articles 3 ही हैं. Then there are surely some rules for that, and that all rules basically depends on which type of noun we are talking about. So if I give you an example, a car, an apple, the moon, this is how we use them, right? Now, first, which kind of how many nouns we are talking about, article usage will depend on that first thing, okay? So as we know, noun are of 2 types, singular and plural. Singular मतलब जब हम एक की बात करते हैं, जब एक ही पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, राइट? आर्टिकल्स कितने यूज करते हैं इस केस में? तीनों आर्टिकल्स, ए एंड द। एग्जाम्पल, अ बुक, एन अम्ब्रेला, द टीवी। हाउ डू वी यूज दैट? सो आपको पता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो 21 लेटर्स बचे हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जो भी स्पेलिंग्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं उससे पहले हम अ का यूज करते हैं, लाइक अ चेयर, अ डॉग, अ बैट, अ ट्री। इफ यू सी इन ऑल दीज एग्जांपल्स, C, D, B, T, these all are consonants. That is how we are using a before these nouns, right? Coming to vowel, how many vowels I told you? There are 5 vowels, right? Whenever any spelling is starting with a vowel, O, E, I, we are using an for that. But wait. Very important to know, अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट भी होता है लेकिन उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के जैसी है, we will not be using and in that case we would be using just a for that. Example, uniform, 1 rupee, university, right? U phonic sound U की क्या होती है? Right? So this is not, it is vowel, but it sounds like a consonant. 1 O phonic sound is what? O. But here it sounds V. So we will not be using an here. Same with university. Very important. Important किस लिए है? Tip and tricks में से ओलंपियाड में आपको बहुत confusing questions आते हैं. So if kind of question comes from the article, that would be a confusing one only. They might give you the letter which would be starting with a vowel but sounds like a consonant, then you have to think about it, right? Next one, where do we use the? Okay, we can use it before any consonant and vowel. The pen, the owl, the TV.
but still कैसे decide करेंगे? We will learn about that also, right? Coming to the plural, wait on, we will be learning about the, okay, don't worry. Plural जहां two और more number होते हैं वहां हम क्या यूज करते हैं? इधर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, या फिर द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर एंड प्लूरल. अ ट्री, trees. An elephant, elephants. The cat, the cats. The egg, the eggs. Did you see? यहाँ पे हमने trees में no article, right? In elephants, no articles. Correct? This is how we would be deciding which article we need to use. Right? This was about how many nouns, right? Articles का use depend करता है which type of noun we are using. मतलब नाउन जो होती है जनरल भी हो सकती हैं और स्पेसिफिक भी हो सकती हैं. जनरल का मतलब क्या होता है? वन ऑफ मेनी. वी डोंट नो विच वन एंड वी कैन नॉट सी दैट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक. कोई भी बुक मैं यूज पढ़ सकती हूँ. रोहन नीड्स एन इरेजर. कोई भी इरेजर वो यूज कर सकता है. तो जनरल आर्टिकल्स हैं, ये जनरल नाउन है. यहाँ पे हम ए, एन और नो आर्टिकल, यहाँ पे हम द का यूज नहीं करते हैं. राइट? स्पेसिफिक, अ सर्टेन वन. हमें इसके बारे में पता होता है. मेजरली, विच, वी नो विच वन, वी कैन सी इट. इसमें जो बता रहा होता है, the one who is telling and the listener जो सुन रहा होता है, they are able to correlate with each other. That is the specific. Means हम एक specific के बारे में बात करते हैं. और आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं? the. Now comes कि हम the कहाँ पे यूज करते हैं, right? The sunrise is beautiful today. हम एक specific sunrise की बात कर रहे हैं यहाँ पर. The school is closed. The milk is white. Very specifically we are telling about here. That is why we would be using the here. I hope this is clear to you. For more better understanding, general article and specific article का एक comparison. अगर मैं बोलती हूँ I want a pen, it can be any pen. General, right? So what I have used here, अगर मैं बोलती हूँ I want the blue pen, I'm saying I am specific, I want blue pen only, then I would be using the here. Another example, Riyaz wants to eat a snack. कोई भी snack वो खाना चाहता है. If I say Riyaz wants to eat the laddu, मतलब उसको specifically पता है उसको लड्डू खाना है, then we will use the here. If I say Amar has a pen, general है, कोई भी pen है. Amar wants to buy the blue pen only. He is very specific. I hope this is very much clear to you now. Again, बहुत सारी जगहों पे हम आर्टिकल्स नहीं भी यूज करते हैं, जैसे बिफोर द नेम ऑफ रिलेशन. एग्जाम्पल, फादर, मदर. जितने भी रिलेशंस हैं हम ऐसे नहीं कहते द फादर, अ मदर, राइट? मटीरियल से पहले हम लोग यूज नहीं करते हैं. लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, द गोल्ड, द सिल्वर, ऐसे नहीं यूज करते हैं. प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लैंग्वेज और सर्टेन फेजेस में भी हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. बिफोर आई गो फ्रॉम हियर, there is a quiz link based on, the question would be based on Olympiad pattern. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी मिलेगा, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो आपकी ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए. अगेन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर, कमेंट, लाइक इट, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली को हमारे इस कोर्स के बारे में बताइए, हमें ज्वाइन करिए. थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.